Today's Our Noble Lineage will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Polexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. आदरणीय दर्शकों नमस्कार। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर हमारी विवेकवान वंशावली में स्वागत है। जैन भारत का एक प्राचीन धर्म है, विश्वास के धार्मिक परिवार से चालित हुआ है। यद्यपि एक अल्पसंख्यक समूह लगभग 49 मिलियन श्रद्धालु इसके मूल भारत में है, के साथ धर्म, नैतिकता, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जैन का प्रभाव विचारणीय है। विस्तृत रूप से फैली भारतीय अवधारणा जैसे कर्म, अहिंसा, मोक्ष और पुनर्जन्म वास्तव में या तो जैन शिक्षकों से उत्पन्न हुए हैं या श्रमण परंपरा से विकसित हुए, जो जैन से चालित हुआ है। विद्वता की उनकी परंपरा के कारण जैन सबसे शिक्षित समुदाय और अपने देश में प्राचीन पुस्तकालयों में से समझे जाते हैं। श्रीमान चेतन सांघवी जैन केंद्र दर्पण डाइजेस्ट के संपादक और संयुक्त राज्य में उत्तरी कैलिफोर्निया के जैन केंद्र के उपाध्यक्ष और श्री हिना नायडू जैन केंद्र अंतर्मत समिति की सदस्य जैन मान्यताओं के अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए आज हमसे जुड़ते हैं। Jains respect the independence of every living being and also understand the interdependence among all living beings and their dependence with the environment which they live in. Unnecessary destruction of any of these three has a negative impact on the soul, which directly or indirectly affected it. And obviously we know that it has a long-term impact on the ecology. अपने विचारवान और परोपकारी सिद्धांतों द्वारा जैन के मितव्ययी जीवन का तरीका प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी मित्रवत और सतत होता है। वास्तव में जैन शिक्षा 2600 वर्ष पूर्व से अभ्यासकर्ताओं को उस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण अत्यधिक आग के उपयोग से छुटकारे की सलाह देती है, जो हमारे वातावरण को दूषित करता है। Traditionally, if you see the way Jains live and the way they've been taught, is it tells a person to have a living style where you do minimum changes, minimum impact on the environment around you. We are trained to consume less. We are trained to possess less. So we modern Jains are very active in the green movement. Clearly, with respect to the food choices, we reiterate to consume and bear just the necessary which is required for survival and avoid destruction and balance of the nature. दूसरे आत्मज्ञानी गुरुओं के साथ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर ने उद्घाटित किया कैसे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत से पक्षों में विज्ञान से आगे निकल जाता है और कैसे करुणामय रूप से ऐसे ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करते हैं। Mahavir, 2600 years ago, recognized the level of life and consciousness of plants and many millions of microbes that exist that we cannot even see. Jain food cannot be prepared without any harm to any life form. But what Jains prescribe is that we would like to minimize the amount of pain felt by plants and other living microbes. Eating a root-based plant destroys the entire plant, while taking a fruit from a plant may cause less pain, and it does not kill the plant. So it is for that reason Jain traditions have avoided certain foods, even though they are plant-based. In addition, certain plant food can aggravate certain negative emotions, and which would hamper your emotional growth. So, if you look at that, what is nice about Jain food, vegetarianism is a part of it.
but ultimately it is the principle of ahimsa, and that is what is more supreme. जैन के लिए शाकाहारी आहार न केवल श्रद्धालुओं के लिए मांस की उपेक्षा का विषय है, यह सभी जीवों और अपने वातावरण के प्रति अहिंसा की उनकी मान्यता का विस्तार भी है। Jains traditionally have allowed dairy, milk and its associated products, but clearly disallowed eggs, irrespective of them being fertilized or not. It is important to note that in the old days, milk was produced from domesticated animals, and only the excess milk was used for human consumption, adhering to the principle of ahimsa. Moreover, traditionally and even today, Jains do spend a lot of money taking care of the older non-milk producing cattle that have given them milk all their lives. Now, given the current method of mass production of milk by dairy farms and the inhumane treatment of the animals, many modern Jains avoid milk products also. Jains are against the use of honey, simply because most of the methods of production of honey involve killing of many bees. Along the same principle, many Jains do not wear silk. Again, the process of production kills all the silkworms. जैन वनस्पति आधारित भोजन की भी उपेक्षा करते हैं, जिनका दूसरे जीवित जीवों पर एक द्वितीयक प्रभाव हो सकता है। Interestingly, science tells us that a single square centimeter of earth in and around the root of a plant contains a lot more life than any other portion of the plant above the soil. The basic goal in Jainism, once again, is to minimize himsa, and we would try and do that whether we, eat root vegetables or not, obviously not, or we eat fruits and vegetables from above the ground. And so again, principle of ahimsa is what guides us in deciding what we consume, what we eat, and what we use. इन संक्षिप्त संदेशों के बाद हम जैनियों के करुणामय परिप्रेक्ष्य के बारे में और अधिक अन्वेषण को जारी रखेंगे। कृपया अपने लय को सुप्रीम मास्टर टेलीविजन के साथ यहाँ बनाए रखें। Be veg. Go green. Save the planet. So, this is the uniqueness of Jains, that it is not our monopoly. As long as you live in an ahimsic way, you have the right and you can lead yourself to salvation. हम अब आज के कार्यक्रम हमारी विवेकवान वंशावली, जो अहिंसा के जैन दर्शन पर आधारित है, जारी रखते हैं। यह सिद्धांत जैनियों के दैनिक जीवन पर लागू होता है। Being mindful of what you consume and where it comes from, that is something that we practice. Many Jains exercise the same consideration in purchasing other needs. For example, they do not use leather products, check the source of ingredients in shampoos and lotions, etc. As to the stricter recommendation, we'd like to point out that nothing in Jainism is an edict. Jains are asked to live a life with minimal karmic bonding, which means minimize any kind of himsa that you do. So most of the Jains practice Jain beliefs to the limit of their capability and given the circumstances, being aware and mindful of their actions and their effects in terms of karmic bondings to others and the environment around them. इस नित्य जगत में रहना प्रत्येक क्रिया में कारण और प्रभाव होता है। यद्यपि महान प्रयास अहिंसा के कानूनों का अनुसरण करने वाला जीवन जीने के लिए किया जाता है, फिर भी कुछ प्रतिकार अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः जैन मान्यताओं में एक अनिवार्यता के रूप में आध्यात्मिक अभ्यास भी शामिल होता है।
many of these actions of our past, we do not remember because it occurred in previous lives. What is in our control is my actions today and what I plan for tomorrow. If you have performed actions, consumed food which have been karmic food in the past, you do the same thing which we recommend to get rid of your karmas. Do spiritual practice, do penance, remorse, recognition, contemplation, resolve that I will not do this thing again. So the same steps to get rid of the karma, the same step of ahimsa to lead you to the path of salvation. जैन अहिंसा के पथ को मानते हैं एक व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों में लागू होना चाहिए। यह महान पूर्णता और मस्तिष्क की शांति में परिणामित होगा। So essentially, when we talk about ahimsa, we want to say that Jains think of ahimsa not only in terms of other living beings, actions against them, but the actions mentally and verbally. So anything that you do, be aware of or be mindful of. And when you're thinking in terms of mental, physical, and verbal actions, you're going to include the environment in your thought process, and you're going to be gentle towards everything, the whole microcosm around you. अहिंसा के जैन सिद्धांत के द्वारा एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से साथी मानवों और पशु सहनिवासियों के आदर और देखभाल की ओर खींच जाता है। यह प्रेममय पहल हमारे बांटे गए ग्रह के बेहतर स्थायित्व की ओर भी विस्तारित होगा। Our first message is be compassionate to all living beings. Respect and try to understand others' views, even when they are different than yours, and even if they don't agree with you, and even if you don't agree with them. Once you open the doors of compassion, have an open mind, try to understand the natural environment around you, try to understand the animal world, try to understand the world of plants, the world of microbes, you will automatically and naturally start avoiding or consuming excess amount of food which cause himsa. Over time, you will become a natural vegetarian. So we say educate yourself, learn the world around you with an open mind, and you will naturally move towards that direction. पिछले 20 से अधिक वर्षों से परम गुरु चिंगाई ने एक शाकाहारी आहार की सूचना अपनी विवेकवान आध्यात्मिक विरासत में वापसी के लिए की है। एक प्रख्यात मानवतावादी और आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में परम गुरु चिंगाई के करुणा के संदेश ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है, जिन्होंने अपने जीवनों में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया है। The path that your Supreme Master Chiang Hai suggests would be a path that could lead you to salvation, because it is talking about ahimsa through vegetarianism. It is talking about speaking truth. She is talking about not collecting or not taking what is not yours by living a just life, and of course not be possessed by your emotions through illicit sexual behavior or consuming products and food that affect your spiritual state of your mind. So this is the uniqueness of Jains, that it is not our monopoly. As long as you live the life in an ahimsic way, you have right and you can lead yourself to salvation. धरती के एक जलवायु संकट से गुजरने के साथ परम गुरु चिंगाई ने जनता तक व्यापक पहुंच के लिए विविध मीडिया और सम्मेलनों के द्वारा शाकाहारी आहार के
गृह बचाओ समाधान को अथक रूप से प्रचारित किया है। ऐसे समर्पित प्रयास और मानव हृदयों में मधुर बदलावों के द्वारा हमारे धरती घर के महान स्थायित्व के लिए आशा होती है। We have been very impressed with the message of the Supreme Master and the work that you and your organization are conducting to bring the positive message to the world. We find it very interesting that many of you preaching and philosophy are so similar to Jain philosophy. It seems that we are recommending paths that are so similar that we feel by exchanging our views, we surely can help move the world to a non-violent, green, and peaceful coexistence. On behalf of Jain Center of Northern California, I would like to thank your Supreme Master and your organization for allowing us this opportunity to share Jain perspective with you and your audience. जैन केंद्र की ओर से श्री गिरीश शाह के कृपालु संदेश के बारे में बताए जाने पर सुप्रीम मास्टर चिंगाई ने व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से धन्यवाद और शुभेच्छाओं का यह संदेश भेजा है। Revered saints, we are honored to be the humble extension of Jainism and other benevolent faiths. We also thank you for enlightening us and our viewers through your talk on Supreme Master Television. May heaven always support and bless your noble works, and the spirit of Jainism's ahimsa will flourish the world over. हम उत्तरी कैलिफोर्निया के जैन केंद्र के श्रीमान चेतन सांघवी और श्री हिना नायडू और श्रीमान गणेश शाह को करुणामय जैन मान्यताओं पर अपने समय और ज्ञान को बांटने के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के अहिंसात्मक तरीके के सूचन में आपके खूबसूरत हृदय कृपामय हो। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर यहाँ हमारी विवेकवान वंशावली के लिए अगले रविवार को हमारे साथ पुनः जुड़े। आगे कृपया गुरु और शिष्यों के मध्य के लिए बने रहे। जीवन में हमारे विवेकवान पथ शांति और आंतरिक पूर्णता की ओर हमें ले जाए। For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL